students, welcome to Manoeuvre. Today we'll talk about Maharashtra Law CET 3 years 2020 exams. Here you have to emphasize 3 parameters which you can expect in CET 2020. 1. Paper going to be lengthy. 2nd, paper will be tough. 3rd, there will be new type of the question from IBPS. So CET have 4 sections. One is logical reasoning, 30 questions for 30 marks. English, 50 questions for 50 marks. Legal aptitude, 30 questions for 30 marks. And all-time tough GK, 40 questions for 40 marks. So overall 150 questions, 120 minutes time. But not 1 minute to 1 question. Fine. So today along with me have Nisha ma'am for English and legal aptitude. For GK, Ajaz sir. And reasoning myself only. So we'll talk in depth about the expected paper of CET 2020 based on legacy of CET past year papers. For better understanding about the English section, let's talk to Nisha ma'am. Hello everybody, and I am Advocate Nisha Lodia, and now today I'll talk about the preparation for English section. So guys, this session is specifically for 2020 preparation, and I'm here to speak about the English section first. So in the English section, if I go and study back for the 2019 and 18 paper, the 19 paper was comparatively lengthy, and for that reason it became even tougher. So first the hindrance over here I see is about the syllabus, the awareness of the syllabus, the lack of practice, and third is about the speed and accuracy. So let's get started with the syllabus, because I understand that these 3 hindrances are solved, then you can obviously score a better marks. Now, so guys, let's get started with the syllabus first. The syllabus is about, the first we got to start your preparation with the grammar. So grammar rule consists of error deduction, sentence improvement, and choose the correct statement. So if the grammar is done, then these topics are taken care of. Second comes the vocab part. Vocab part consists about the fillers, the close test, and your synonyms and antonyms. If you do a proper vocab, if your reading is proper, say if you're following any newspaper or you're doing word power made easy, or the better content what we have in our Manoeuvre books or our even our online programs and our classroom programs, then you shouldn't be worried about the vocab, which is a very vast program. Then comes about the reading comprehension and paragraph jumble. These are the topics which took lots of time in 2019 as compared to 18 and 17. So I look forward to the 2020 paper also, which I feel the reading comprehension is going to be lengthy, and so for same as the paragraph jumble, because the sentences were very lengthy, whereby it gave a view that it took a lot of time than the expected time by the students. Thereby the score of the students went down. So if you have a proper material to study and your preparation strategy is better, then I think there is no problem where you can score a very good marks in your English preparation. So I pass it on to Azad sir for the current affairs section. Hello everyone. So today we are discuss about the law CET 3 years papers का जो हम डिस्कस कर रहे हैं important syllabus जो है आपका रीजनिंग, इंग्लिश एंड लीगल एंड जीके. सो जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉ CET 3 इयर्स के लिए, जिसमें 40 मार्क्स के लिए आएगा. तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जीके को लेकर क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैड सीन द स्टूडेंट आर कंफ्यूज. उनको राइट वे ही नहीं पता होता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, और वो इतना एडिशनल मटेरियल्स पढ़ लेते हैं कि शायद से वो राइट कंटेंट्स नहीं वो मिल पाता है उनको. तो नेक्स्ट ईयर इस साल 2020 के लिए अपीयर हो रहे हैं लॉ CET 3 इयर्स के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देता हूँ. काफी इंपॉर्टेंट होगा आपको इस टिप्स के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हो, स्पेशली फॉर द स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के लिए. सो लास्ट 3 इयर्स से मैं कंटिन्यू खुद भी पेपर्स को लिख रहा हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पेपर का नेचर कैसा होता है. सो आप लोगों को ऐसा पता होगा कि ये जो एग्जाम्स है इट इज कंडक्टेड बाय द IBPS, और IBPS का जो नेचर होता है वो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली पूछता है. सो लास्ट ईयर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसे भी इकोनॉमिक एंड बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस लॉ CET 3 इयर्स में आएंगे, बट गाइस मैंने खुद ने एग्जाम अपीयर किया था. आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, वहां पे पूरा प्रॉपर एनालिसिस पड़ा हुआ है, जहां पे 3 to 5 क्वेश्चन बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे. सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब इसको स्टडी कैसे किया जाए, क्या राइट कंटेंट है. तो कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूं कि स्टैटिक जीके, जैसे कि स्टैटिक जीके से क्या आएगा. सो आपको जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, इन सब से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब पूरा अच्छे से प्रॉपर स्टडी करना है. देन अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का एरिया
एरिया क्या होता है, इसके लिए क्या क्या एरिया पढ़ा जाए। अगर आप कोई न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो इट्स गुड, बट न्यूज़पेपर और ये न्यूज़ होते हैं सिर्फ यही स्टडी नहीं करना होता है, उसमें से आपको जीके एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूज़ होते हैं वो फाइंड आउट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो एरिया क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने कोई न्यू स्कीम लॉन्च किया, राइट, तो वहां से क्वेश्चन बहुत पॉसिबल होते हैं। किसी को कोई अवार्ड मिला, जैसे रिसेंटली अभी हम बात करें तो नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ है, तो इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपके अपडेट होने चाहिए। जैसे कि अभी इंडिया के अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स का मिला, और भी बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट डे एंड मिलिट्री एक्सरसाइज, राइट, डे और ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सारे एरियाज जो है ना आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू एंड करंट अफेयर्स का जो पेपर 50 मार्क्स का, उसके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया है। अब बात आती है कि पढ़ना कैसे है। तो गाइस एक बात रिमेंबर रखो कि अगर से राइट कंटेंट आपको नहीं मिला तो फिर आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होगा और शायद से आप एग्जाम में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप पूरा हार्ड वर्क दोगे जीके के लिए, बहुत सारे पोर्टल पे, बहुत सारे मैगजीन्स, इस तरह से आप अगर बहुत सारे ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज अगर आप फॉलो करते रहे, और जो फ्री के कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बट दिस इज नॉट राइट वे टू प्रिपेयर। सो अगर से मैं एज अ मैनुअल की कंटेंट की बात करूं तो लास्ट ईयर हमने जो मैनुअल का कंटेंट डिजाइन किया था, स्पेशली करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, करंट अफेयर्स के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। गाइस मैं आपको यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे एश्योरिटी के साथ में बता दूं कि उसमें से 15 to 20 क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम्स में आए थे। स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी जिन्होंने हमारे कंटेंट को फॉलो किया था। तो ये एक बेनिफिट होता है, जो अगर से एक पर्टिकुलर एक राइट रिसोर्स से आप कंटेंट को पढ़ते हो, आपका टाइम भी बहुत लेस होगा और आपका उसका एग्जाम्स में काफी बेनिफिट होगा, जिससे आपकी मेरिट अच्छी होगी और जो आपका एम है उसको आप अचीव कर सकते हो बहुत इजीली। तो जीके एंड जो स्टैटिक पार्ट है, जीके एंड करंट अफेयर्स, तो इसके लिए मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा, जो मैंने कुछ एरियाज बताए, अगर से कोई रिसोर्सेस आप फॉलो करते हो तो वहां से इस टाइप की न्यूज है, जैसे स्टैटिक का मैंने बताया, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, एंड करंट अफेयर्स का जो एरिया बताया मैंने, गवर्नमेंट स्कीम, अवार्ड सेक्शंस एंड स्पोर्ट्स और पर्सन से रिलेटेड, तो इस टाइप के न्यूज को टारगेट करके पढ़ना है। बाय द वे अगर से राइट कंटेंट चाहिए तो आप मैनुअल की साइट पे विजिट कर लो, वहां पे बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो दीज आर द टिप्स फॉर द करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए जो आपको फॉलो करने हैं गाइस। Okay guys, so after the GK analysis, here Nisha ma'am आपको legal के लिए बताएंगे कि what are the important thing about the legal section. Okay guys, again for legal, the only thing I am telling you is about the material what you have to study. The syllabus is again very important for legal, and secondly your reading ability, understanding and doing it better. So for the legal, the main topics are going to be a contract act, the torts, the Indian Penal Code, the constitutional law, and your limitation act, partnership, and your intellectual property. So the major course comes from the contract act, and for the contract act you don't need to study the entire law because it is a very vast thing, but you have to study only for the examination point of view the first initial 10 to 12 topics. Okay, then comes the tort act. Tort act again is something which is a civil wrong, and you have to not study the entire thing, only there are 20 to 12 topics, you have to study that. Then comes the Indian Penal Code and constitutional law. Constitutional law covers even the legal GK part, and then the intellectual property. Intellectual property is all about patent, trademark and all. There comprises questions of say 1 to 2 marks, and then the Partnership Act, LLP. There also you get questions for only 1 to 2 marks. So the first 3 topics what I discussed are the most dominating area, but you need to have a proper content and proper understanding towards the subject, because the words what you're going to understand over there will be for the first time. So if you are aware about the content, it will become very easy, as the entire exam, as Dev sir said in his starting points, that the entire exam is time bound. So for a better preparation, you should have a good material and quite a better speed and accuracy. So this is how your entire legal section should be covered. So now for logical, I think Dev sir will cover better. Yeah. So logical reasoning majorly divided into 3 parts. First is traditional reasoning, second is analytical, and third is critical. For traditional reasoning, you need to know all the shortcuts. Like if I talk about a topic, decoding, number series, syllogism, inequality, these all are traditional logic.
Critical reasoning, you need to read the statement carefully, then only you can answer the questions. And my all-time lovable section, I would say, is analytical reasoning, which is nothing but puzzle part. So it requires lots of practice because in puzzle area, it really requires your lots of brain. Out of 30 marks of your logical reasoning area, 50% of paper, which is nothing but 15 marks based on your analytical reasoning, which is nothing but the arrangement part. So for puzzle, you need to practice all kind of a question: linear arrangement, circular arrangement, distribution, and the miscellaneous part. For the totality of this is for the totality of all the section of guys: logical reasoning, GK, legal aptitude, and English. So for English, you have to read newspaper first of all, first page of newspaper and editorial page, which will enhance your GK also, because while you are reading the page 1, you get updated with the current news. And for legal aptitude, again reading is important. So whole and soul, reading is the most crucial part of your CET paper. So those who are starting their prep from December or Jan onwards, for them GLC 120, which is the recent batch we have launched, this is the decent time for your CET prep, because 6 months, so 5 to 6 months, if you are devoting your 100%, giving good time for the preparation, so you can definitely score 120 out of 150 marks in your CET exam, and finally you will end up with the GLC and other colleges like IILET Pune and Advani. So sir, what you suggest for the GK section of CET 2020 paper? जीके के लिए स्पेशली जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा स्टूडेंट को कि एटलीस्ट जो आपका एग्जाम्स होने वाला है, आपको पता है मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में होगा, सो आपको जैन से लेकर के ना पूरा मिड ऑफ मई तक का जितना करंट अफेयर्स है उतना स्टूडेंट को अपडेट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना यहीं से करंट अफेयर्स के आने वाले हैं. बट फॉर द बेटर सजेशन मैं बोलूंगा आप जुलाई से पूरा स्टडी करके रखो, आप एक सिक्योर पॉइंट पे रहोगे जो करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी के लिए जो भी आप फॉलो करते हो बुक्स वो आप फॉलो करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से जो क्वेश्चंस बनते हैं. So first, basically, first 6 months of your current affairs you need to be thorough. जहाँ से most of the question frame होंगे. Okay, so since paper will be happening in the month of probably May end or June. So 6 months तक का GK you need to thorough. वो बहुत important होगा. That is very important. Okay, and what about ma'am English and the legal aptitude? English and legal aptitude both requires first of the awareness of the syllabus. Actually, examination point of view से बच्चों को क्या पढ़ना है, you know, the preparation strategy has to be smart. And secondly, my entire emphasis is only on reading. The more they will read, the more they will be comfortable with the language, the more productive will be the answers. As also I had been through the English section last year 2019 जब मैंने लिखा था. So English section was lengthy, मतलब RC was खत्म ही नहीं हो रहा था. I was going through the reading, मतलब almost like a 5 to 6 paragraph. अगर आप last year आपके friend से पूछोगे कि CD लिखा था तो how was the paper, so he will definitely say paper was lengthy. So this was Yes, the papers are lengthy, and where there is a hindrance problem is only about the reading. So if you emphasize on reading, you will definitely score better. Right. And as I said, logical reasoning मुझे all time लगता है कि puzzle पे ज़्यादा emphasize करेगा CET. Mostly analytical part जो आपका 15 marks का, that could be 20 marks भी हो सकता है out of 30 guys. एक well practice चाहिए. So इसके लिए in depth practice varieties of question की, मतलब अगर which means you should be thorough with the distribution, linear, parallel row, then your circular row facing inside, outside, ये सारे type के questions. And very important, don't waste your time. क्योंकि होता क्या है कि when we start writing the paper, we end up with the wasting of time when we stuck in a particular question type. In future also we will be coming up such videos and guiding you with respect to the CET 2020. So all the best guys and thank you. Bye bye. Farewell.